Welcome back all. Hopefully your test went well. No matter the result at this stage, this is the first major step you are taking towards test attempts and test analysis. So let's treat this first and foremost as part of your learning curve more than anything else. I would also like to welcome those who have joined us on YouTube Live. You can keep posting your queries in the live chat. I will take them up in due time. If you're watching this later, then you can post it in the comment section below. We'll always reply to genuine queries. Before I start attempting the test, few things I would like to mention. Firstly, while I'm taking the test, for obvious reasons, I will not be able to look into the doubts and queries that you raised. Nevertheless, I would encourage to post them as they come to you so that you don't forget the doubts. Keep posting the doubts in the classroom chat or the YouTube live chat, depending on where you have connected from. Once I've finished the test, I would re-enable the option to unmute yourself, obviously for those who are in the classroom. Also, in terms of the timeline, after finishing the test, I'll provide a brief analysis, which will be followed up by the Q&A section. And finally, coming to the test thing, when I start LRDI section of any CAT paper, I always start with a very quick scan. That is a 1 to 2 minute scan of the section to get a feel of the sets. This is precisely what I mentioned today during the baseline strategy discussion of the intro. So I will also do the same. Thereafter, I will start taking decisions, analyzing sets before solving, and playing to my personal strengths, attuned to the type of the sets that I got a feel of during the quick scan. Although this may not directly correlate to your strengths, but the idea is to understand how and why I'm taking the decisions. So without further ado, let me start on the test. Just give me a few seconds. Right, so I'll use this part for the rough work, and you can see the screen on the side. I'll start it off. Okay, so this seems like an LR set where I have to solve it first. Questions also seem like pretty direct. One thing I noticed is here some numerical values and there are some direct questions of who and what. So maybe you have to solve related to some information out here. With 6 questions out here. Okay. This is the next one. Also seems like an LR set. Quite a lot of information, but I think this is also solved first and then the questions. The questions also seem pretty direct. Yeah, okay, so this also has 6 questions. Fine. So this also seems something to solve for first. A lot of information have been provided. So guess you have to figure out something from these. But question, it says what best can be concluded. So not necessarily direct. It could be some possibilities or scenario based. Yeah, which are calling necessarily true. So again, scenario based. What best can be concluded. So this is maybe some cases oriented will be there. This is on a particular scenario. So I think this will be some scenario based kind of set. This seems like a DI one. Yeah, no additional information as such. I mean, this is like seems like elaboration of the chart, and I think this is a pure DI set. Questions also seem like that, so I can maybe play around with this in smart way. So what I'll do is I'll choose one of the first 2 sets. I'll just go ahead and analyze the first one. I choose it in that way only. So let me just analyze this first. A, B, C, D, F, G are 7 people in a town. Any pair of them could either be strangers, acquaintances, friends, or relationships are mutual, for example. Yeah, this is pretty obvious. This is okay. So it's a mutual relationship.
Partial information about the number of friends according to each of these among them is among them. Okay. Okay, so this is like among these 7 people. So every row should add up to 6. So this I can figure out. This I can figure out. I also know that every column will be giving us a total of even because of this mutual thing. Uh, so something may be useful in this one. I don't know right now. Additional facts: A, B, and C are mutual strangers. Yeah. So if I remember in the questions also, who are both constructed. So we have to maybe figure out this thing. So let me get a feel of these. A, B, C are mutual strangers. Okay. D and F specific information. C and D specific. Every friend of A is an acquaintance of B. Every acquaintance of B is. Okay. So this seems like an interesting information. So this value and this value should be equal, not only numerically, but the entry will be same. Every friend of Bharatan is an acquaintance of Amuda and every acquaintance. Okay, so all right. So these two will swap, these two will swap. So these should be identical. Yeah, so this seems like quite a good information. So let me just, yeah, let me attempt this set first. Okay, so what I'll do is build up the same table. G, right? Yeah. Friends, acquaintances, and strangers. Right. Take those numbers also. So 1 year, 4 year, 2. Yeah, so this is 3 and 2, 5. So all the rows should give us 6. And same thing for 8. So this is also there. Okay, now let me look at the specific ones. A, B, and C are mutual strangers. So A has B and C are strangers. B has A and C are strangers. And C has A and B are strangers. Something like this. Amuda, Dinesh, and Fari are E's friend. So E has A, D, and F as friends. So A will have E as a friend. D will have E as a friend. And F will have E as a friend. Okay, so quite a bit done. I think we can start, but let me wait. C and G are friends. So C has a friend G. G has a friend C. Okay, and that information, right? So, so if this is E here, this should be E here, and if B has a friend E, E also, sorry, acquaintance. So this will be B here. Great. What else? What else? Nothing as of now, right? Okay, so let me look at this E row because all 4 entries are already here. So we have A, B, D, F. So C and G, C and G. G has only one friend. So yeah, so G can, okay, 1 second. C and G, C and G. Interesting. This could be C. Come back to that. Did I miss anything? Let me quickly check this. ABC mutual friends, fine. Amuda, Dinesh, Fani are mutual friend. ADF, A में E, D में E, F में E, ठीक है. C and G are friends, CG, GC, ठीक है. हाँ, बाकी तो as it is. अच्छा, ये कौन हो सकता है? BCE is not possible. D, F, G, B, C, कोई भी possible हो सकता है. अच्छा, बस सर possibilities आ रहा है. Maybe I'm missing something. ये रो में बहुत कुछ आ गया है. A, B, D, okay. C and G, C and G.
अच्छा ये कौन होगा, इसमें भी 3 एंट्री है, सो ए बी जी सी डी ई राइट, नो नॉट सी सॉरी, डी ई एफ, ओके डी ई एफ, ओके I'm getting a bit stuck here. ये वाला कौन होगा, ई बी सी ए का डी एफ जी, डी एफ जी, डी एफ जी, which are like this thing, I mean correlation डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा है मुझे, I might have to skip it now. ठीक है इसको अभी skip करते हैं, let's move to the next set. Maybe I'm missing something, I'll come back to this if I have time. अच्छा, journal plans to publish 18 research papers, इसको थोड़ा shift कर लेता हूँ. 18 research papers written by 8 authors in 4 issues of the journal, scheduled in January, April, July, October. Each of the research papers are written by exactly one of the 8 authors. 5 papers were scheduled in each of the first 2 issues, while 4 were scheduled in each of the last 2 issues. 18 papers, 4 issues. 4 issues में से 5544 that is given. Each research paper exactly one of the 8 authors. ठीक है, उसमें correlation होगा. ठीक है, every author wrote at least one paper, at most 3. Okay, total number of papers written by ADGH was double the total number of. Okay, तो ये 2:1, तो 12 and 6. Oh, 12 मतलब ये 3333 होगा, और उस तरफ it will be either 1122 or 1113. ठीक है, 4 of the authors were from India, 2 were from अच्छा एक और एंगल है. Each author belonged to exactly one of the 3 areas: manufacturing, automation, logistics. 4 of the authors were from logistics and 2 were from automation area. ठीक है, as per the journal policy, none of the authors could have more than 1 paper in any issue of the journal. ओ अच्छा, तो इसमें एक मैट्रिक्स काइंड ऑफ आइडिया आ रहा है, मे बी अगर ऑथर और इशू का मैं ले लेता हूँ, देन इट कैन फॉर्म अ मैट्रिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग, बट ऑथर के रिस्पेक्ट में देयर इज एरिया एंड कंट्री आल्सो. ओके, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन? एफ एन इंडियन ऑथर, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट, डायरेक्ट. Okay, what is this? Sorry, wait a minute. None of the Indian authors were from manufacturing area. None of the Japanese or Chinese were from. Okay, okay, okay. तो ये वाला पार्ट को रिजॉल्व कर रहा है थोड़ा सा. ऑटोमेशन का जो 2 है दोनों इंडियन होगा. मैन्युफैक्चरिंग का 2 जो है दैट विल बी जापानीज और चाइनीज का कॉम्बिनेशन. ठीक है, A and H were from different countries but had the paper. ठीक है, डायरेक्ट. C and D both Chinese from different areas but had the same number of paper sheet. अच्छा, ये AD क्या था? ADG. Okay, okay. Okay, this is crucial from overall point of view. तो सी एंड ई का सेम होगा, मतलब 1113 में 11 टेक का या 1122 ऐसा कुछ. ओके, एट द सेम नंबर पे ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव इश्यूज ऑफ. अच्छा, तो ई अगर पेपर शेड्यूल कंसेक्यूटिव तो ई का एक तो हो नहीं सकता, तो ओके, सो दिस इज 1122 वाला केस. ओके, अच्छा, तो नाउ आई एम गेटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ, सो आई कैन मे बी कनेक्ट दी. सो लेट मी डू वन थिंग फर्स्ट. अच्छा, मैं डायरेक्टली वो टेबल पे जाता हूँ, सो आई जस्ट मेक दिस टेबल. ये थोड़ा बड़ा होगा. So A, B, C, D, E, F, G, H. We have Jan, February, March. नहीं sorry, कुछ अलग था. Sorry, Jan, April, July, and October. These are the 4 months. Okay. For the time being, अभी मुझे question नहीं देना, so let me just expand this a little bit. जगह मिल जाएगा. You guys will not have that problem. Notebook में थोड़ा space management देखना पड़ता है. Anyhow, so
So country and area, ठीक है। अच्छा, वो न्यूमेरिकल वाला आई डोंट हैव टू टेक इट, बाहर में इसी पे ले सकता हूँ। पहला दो का 5 था, नेक्स्ट टू का 4, राइट? 5 papers in first two issues, yeah. So these two will be 5, 5. These two will be 4, 4. Okay, great. अच्छा, ADGH are 3, 3 all. So 3, 3, 3 and 3 ADGH. And इससे मुझे पता चला था C and D का 2, 2 होना चाहिए. So C and D should be 2 and 2. And these would be 1 and 1. ठीक है, ये numbers हो गया. Great. What are the numerical thing I have? इसमें थोड़ा सा scroll करता हूँ. तो आई हैव कंट्री वाइज इंडिया का 4 है, इंडिया इज 4, जापान एंड चाइना आर 2 ईच, एंड एरिया वाइज लॉजिस्टिक्स का 4 है, ऑटोमेशन का 2 है, ऑटोमेशन का 2 बोथ हैज टू बी इंडियन, एंड मैन्युफैक्चरिंग का 2 है, दे हैव टू बी जापानीज और चाइनीज, दैट वाज सम पॉइंट हियर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आंसर ही है, पर ठीक है, बात कर ही लेता हूँ, मार्क ही कर लेता हूँ। BCEG ना, BCE, नॉर्मली आई डोंट डू दिस। BCE इज 1 to 2, 2 है, G का 3 है, ओके, सो दैट इज दिस वन। नॉर्मली आई डोंट डू दिस, बट ये तो बट ऑब्वियस था। अच्छा, लेट मी टेक द डायरेक्ट आंसर। If an Indian author from logistics area write only one paper, it was scheduled in the October issue, ये बोला कि मैं, बट anyhow, one paper वाला पूछ रहा हूँ। If an Indian author from the logistics area, so if is an Indian author from logistics area, one issue वो तो ठीक है, but अक्टूबर में, okay, so this is F, close है। अच्छा, A was from automation area, अच्छा इसको settle कर सकते हो क्या? हाँ, I think one point number 1 तो हो गया, so point number 2 was great. A was from automation area and did not have a paper scheduled in October issue. A अगर automation से तो has to be Indian, so this is India. Did not October 3 है, तो all of these should be ticks. None of the Indian authors, ये तो हो गया था। A and H were from different countries but had the paper scheduled in the same issues. Okay, तो H का भी 3 है, तो ये same issues में होना है। This is not Indian, ठीक है, कौन सा है I don't know. Area बोला है क्या? H नहीं, अच्छा ठीक है। C and E both Chinese were from different areas. अच्छा, C and E are both Chinese, are from different areas. Interesting. तो लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए ना, बिकॉज ऑटोमेशन तो हो नहीं सकता चाइनीज का। सो लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स ऐसे लिख रखता हूँ फिलहाल। had the same number of paper scheduled. Further, E had the paper scheduled in consecutive issues and journal C did not. अच्छा, इसको अभी कैसे लिखूं? ठीक है, मैं ये पॉइंट नंबर 5 है ना, पॉइंट नंबर 5 का पार्ट 2 ये पार्ट में देख लूंगा। अच्छा, B from the logistics area had a paper scheduled in the April issue. B from logistics, paper in the April issue. ये सब ब्लैंक है, कंट्री नहीं बोला है, ठीक है, फाइन। B and G belong to the same country. None of the papers were scheduled in the issue of the journal. Same issue in the journal. B and G same. अच्छा, एक सेकंड, 2 चाइनीज निकल गया, तो ये नॉट इंडियन, ये दिस हैज टू बी जापानीज। B and G belong to the same country, तो दोनों जापानीज तो हो नहीं सकता, बिकॉज़ 2 ही जापानीज है मेरे पास, so these two have to be Indians. So B and G are Indians. And none of their papers scheduled in the same issue. G का 3 है, तो B का जहाँ पे ठीक है क्रॉस आएगा, बाकी सब ठीक आएगा। D a Japanese author from manufacturing area, okay. D a Japanese, तो कंट्री सारे हो गए, बढ़िया। D a Japanese from the manufacturing did not have a paper scheduled in the July issue. Okay, इसका भी 3 है, तो did not in the July, meaning rest of the 3 should be ticks, okay. C and H belong to different area. C and H belong to different areas.
अच्छा एरिया का काउंट क्या है मेरे पास, ये दोनों में से एक लॉजिस्टिक्स होना पड़ेगा, दो वी हैव टू मोर लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चर। अच्छा जापानीज वाला ऑटोमेशन नहीं हो सकता, तो ऑटोमेशन यही पे आएगा, तो एक लॉजिस्टिक्स और नहीं क्या बचा, 1 सेकेंड, दो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये लॉजिस्टिक्स ही होना पड़ेगा। अच्छा सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी, सी एंड एच डिफरेंट एरिया, तो ये वाला लॉजिस्टिक्स है, दिस हैज टू बी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एरिया एंड दिस इज डन। अच्छा इसका काउंट क्या है, जनवरी है 4 ticks, अप्रैल 4 ticks, एक एक टिक बचा है, जुलाई 3 ticks, अच्छा सब में एक एक टिक बचा है, ओके ग्रेट। तो ये जो पॉइंट था कौन सा कंसेक्यूटिव था, E is consecutive, so E का consecutive होना है, C का नहीं होना है, so E has to take the middle two and then these two, so this सारे कॉलम में एक एक टिक बचा हुआ है, so this is pretty obvious, done, so yeah that's the entire set, मैं शायद reduce कर पाऊंगा, okay maybe I can reduce the size if I can, just 1 second let me check, ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है this much is fine guys, yeah okay, तो ये तो सॉल्व हो गया था अपना, just let me cross check once, B C E G 1 2 2 3 great. How many papers were written by Indian authors? Indian authors one, ऊपर में 3 1 3 8, okay. Which of the following must be true? Every issue had at least one paper by author from each country. जनवरी अप्रैल जुलाई में इंडियन तो पक्का हो जाएगा, अक्टूबर में या अक्टूबर में इंडिया आ रहा है, सी एंड डी का अगर सोचता हो तो चाइनीज तो हो ही जाएगा इन एवरी इशू, ठीक है, जापानीज जापानीज, अच्छा एच में जैन अप्रैल जुलाई हो गया, एंड हाँ डी का तो ए इज करेक्ट, ठीक है, बी में बोल रहा है एवरी इशू हैड एट मोस्ट 2 papers बाय, ओके एरिया, तो एवरी इशू मोर देन 2 है कि नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, जनवरी में ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन लॉजिस्टिक्स, ठीक है, अप्रैल ऑटोमेशन लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक, अच्छा लॉजिस्टिक्स 3 हो गया ना, तो ये गलत है, सो ओनली ए, which of the following is false, every issue had exactly 2 papers by authors from logistics area, ये तो ऑलरेडी पता है पिछले वाले से, अप्रैल में 3 था, that is false. Which of the following statement is false, there was exactly 1 paper by an author from manufacturing area in April, अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग का एक ही है, that is correct, 1 from logistics in October, अक्टूबर में हाँ लॉजिस्टिक्स का एक ही है, 2 2 मैन्युफैक्चरिंग जुलाई, अच्छा जुलाई का ऑटोमेशन लॉजिस्टिक्स, ओ मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, सो दिस विल बी द आंसर। Which of the following is the correct sequence of the papers, number of papers, automation, manufacturing, logistics? अच्छा automation का 3, एक सेकेंड, ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग का दो दो एंट्री होगा ना, ठीक है, तो ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग का देख लेता हूँ, ऑटोमेशन 3 हियर एंड 3 हियर, ऑटोमेशन इज 6, मैन्युफैक्चरिंग इज 2 एंड 3 5, ओके सो 6 एंड 5 तो वो 7 मिल जाएगा, ठीक है, ओके दैट्स इट राइट। अच्छा फेयर इनफ टाइम, मेरे को एक सेट मेरा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था, तो मैं इस पे थोड़ा खेल लेता हूँ पहले। अच्छा व्हाट डू वी हैव, सो हॉरिजॉन्टल बार्स इन द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट 2020 एग्रीगेट सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर डिफरेंट सब कैटेगरीज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, टॉप 4 सब कैटेगरीज, टॉप 4 मतलब अच्छा बुक केस, ओ टॉप 4 इन द डायग्राम, अच्छा ठीक है, बिलोंग टू द फर्नीचर प्रोडक्ट, बॉटम 4 एक्सेसरीज, हाँ लास्ट 4 इन द डायग्राम, टेक्नोलॉजी व्हाइल द अदर बिलोंग टू ऑफिस सप्लाई, ठीक है ये तो बाद में देख सकता हूँ, इफ आई एम फॉर ईच ऑफ द कैटेगरीज वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग द सेल्स ऑफ द 2019, ओके तो 2019 दिस 2020 दिस, हाँ ठीक है फेयर एनफ, सो आई अंडरस्टूड, टोटल सेल्स इन 2019 फ्रॉम ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज वो बीच वाला था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ तो सारे कितना पड़ेगा, अच्छा कहाँ से, टेबल्स के बाद एंड एक्सेसरीज के जस्ट पहले सप्लाईज तक, ओके सो फेयरली रफली देखता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज तो है नहीं, ठीक है 3.6, 0.44, 1.9, 5.9, 5.9,
6.3, 6.3, 6.4, 6.4, 6.7, 1.5, 8.2, 8.1 कुछ आएगा. Then this is what 4 के ऊपर 13 point something. एक सेकंड 8.6, 4.4 टाइप्स 13. मैंने कुछ गलत किया है. एक सेकंड 13 तो है नहीं ऑप्शन में. 3.6, 0.3.6, 0.44, 1.9, 5.9, 2019 का भी था. हाँ 5.9, 5.9 and 0.3, 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3, 0.3, 6.6, 1.5, 8.1, 4 point something, 12 point ऊपर चला जा रहा है. 13 मैं कुछ गलत नहीं. ओ सप्लाई भूल जा रहा हूँ मैं बार बार. अच्छा अच्छा ओके हाँ ये 1 है तो 13.5. हाँ ये मतलब it was coming to close to that but then not reaching that anyhow. अच्छा ये बाद में एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर रखता हूँ. मे बी आई एम रॉन्ग. अच्छा परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन फर्नीचर कैटेगरी फ्रॉम 2019 to 2020 is closest to percentage increase in sales in furniture category. सेल्स इन फर्नीचर. फर्नीचर था लास्ट का चार. ओके नहीं पहला चार ना फर्नीचर बुक केसेस है ना. ठीक है ओके तो अरे बाप रे. अच्छा रफली इफ आई सी सब वेरी क्लोज ऑप्शंस. 2025 क्लोज है बट 2025 जाएगा क्या. ये कितना है. दिस इज 6 पॉइंट समथिंग 7. तो दिस इज लाइक ठीक है मतलब 6.2, 0.8, 12% कुछ आसपास आ रहा है. ये तो 2 से 2.2 टाइप का हो रहा है टाइप्स 10% के आसपास. ये दोनों तो बहुत ही कम होगा. हाँ मतलब 1 इज लिटिल स्मॉल बट आई डोंट थिंक 10% से ऊपर होगा करके. तो 8% इज फेयर एनफ. हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड द सेल्स ऑफ 4 million or more in 2019 and registered an increase in sales in excess of 25% in 2020. 4 million or more in 2019. अच्छा तो 4 million और more मतलब ये वाला लाइन के ऊपर ये तो लेस हो गया. दिस वन 5.7 कुछ होगा. हाँ ये तो 25% से डेफिनेटली ऊपर है. दिस वन नो दिस 5%. अगर 4 होता तो 1 का इंक्रीज कुड बी 25% बट हाँ तो आई थिंक ओनली दिस वन एक ही होना चाहिए. थीटा है रिस्क ले लेता हूँ. मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ. इसके बाद मेरा टाइम मिलेगा तो improvement index of a category is a maximum percentage increase in sales from 2019 to 2020 among any of its subcategories. The correct order of categories in increasing order of this improvement index. Okay. Improvement index of categories maximum percentage increase in sales from 19 to 20 among any of its subcategories. The correct order. अच्छा तो किसी एक का मतलब हाईएस्ट वाला राइट. अच्छा इसका तो हमने देख लिया है मतलब सॉरी इसका नहीं किसका देखा. हाँ ये वाला. सो दिस वन वाज 25%. तो ये जो है दिस वाज व्हाट टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ था ना. हाँ तो टेक्नोलॉजी का तो 25% कुछ है. एंड ऊपर वाले का तो टोटल हमने देख लिया था मतलब जिसमें दिस वन वाज 12% के आसपास. तो टेक्नोलॉजी विल बी डेफिनेटली मोर देन फर्नीचर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल. तो इन दोनों में से कुछ होगा. टेक्नोलॉजी हैज टू नहीं सॉरी टेक्नोलॉजी हैज टू बी. एक सेकंड में कंफ्यूज हो गया. दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज फर्नीचर राइट. तो टेक्नोलॉजी विल बी मोर देन फर्नीचर इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल. फर्नीचर टेक्नोलॉजी फर्नीचर. तो ऑफिस सप्लाई हाईएस्ट और लोएस्ट. अच्छा ऑफिस सप्लाई में दिस विल बी क्वाइट हाई. ये कितना है 2 है एंड 3 के ऊपर 50% के ऊपर हो रहा है. ओके सो दिस इज द हाईएस्ट. ऑफिस सप्लाई इज हाईएस्ट. या दिस आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट. Okay, so I have to take a big call now. मैं अटक गया था. Let me invest a bit of time on it. Not too much. Otherwise, फंस सकता हूँ फिर से. So let me. एक सेकंड मैंने सब कुछ ठीक से लिया था ना. Let me check that. 1141 है, 2 है, 1 है, 2, 1. Okay, great. ABC Mutual Strangers, that is done. C and G are friends.
दैट इज डन। जी एंड सी ठीक है, हो गया। एवरी फ्रेंड वो वाला पॉइंट था, तो ई का इधर आएगा, ई में बी यहाँ पे आएगा, एडीएफ यहाँ पे आएगा। तो इसका मैं सोच रहा इसका क्यों नहीं मिल रहा है, इसका नहीं मिलेगा तो आई डोंट थिंक आंसर आएगा। टेक सम 2 minutes to figure this out, otherwise I'll just leave this. Okay, let me think about this. अच्छा, इवन ऑड का सोचो क्या? एडीएफ सी जी, सी में जी ए बी, तो ए बी, सी तो खुद नहीं होगा, तो डी ई एफ, तो इसमें डी ई एफ में से कुछ होगा। ओके, डी एफ, हाँ अच्छा, इसको मिस कर रहा था मैं, यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे डी ई एफ कुछ होना चाहिए। डी ई इज नॉट पॉसिबल। नहीं, क्या सोच रहा हूँ, आई गॉट कंफ्यूज्ड। डी ई एफ में से कुछ होगा, बी का। ओ अच्छा, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, आई वाज थिंकिंग नो। एडीएफ का बी, एडीएफ बी सी जी, might have missed something out here. Think I should leave it. It seemed like an easy set to begin with. No, I think I have to skip this. Maybe अगर last में time बचेगा तो I can just think again or something. I'm missing something out here. And let me just go to this one. अच्छा, इसमें क्या बोला है, गंगा कावेरी वगैरह कुछ है। ओके, 3 women, रॉ मटेरियल्स, सेल 5 फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिक्स फूड, ठीक है। टेबल 1, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू 5, अच्छा सबका रॉ मटेरियल दे रखा है। 1 unit of finished product requires 1 unit each of the raw materials। अच्छा, इसके लिए एक एक चाहिए, इसके लिए एक एक चाहिए, ठीक है फाइन। 1 unit of milk cost, अच्छा तो चारों मटेरियल का कॉस्ट दे रखा है। ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 2 times नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक दैट प्रोडक्ट। ओके, तो इसका 4 का प्रॉफिट 4 4 8 6 समथिंग लाइक दिस। हाँ, एग्जांपल दिया। लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स आर सोल्ड, अच्छा लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स, आई थिंक कुछ रेवेन्यू रिलेटेड होगा, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे एट अ लॉस ऑफ 1 per unit, तो इनका मैं निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस, हाँ ये रेवेन्यू होगा, तो ये लास्ट आवर मतलब ये वाले आवर पे सेल हो रहा है। ओके ओके, तो आई थिंक दिस हैज गॉट टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ थिंग। नो वन एक्सेप्ट गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी, ठीक है, केसेस कुछ होगा। ईच वुमन सोल्ड आइदर 0 or 1 unit of any single finished product। Okay, this is crucial. So I think if I figure out the revenues, उसके बेसिस में I can distribute and also let me quickly do that। तो पहले मैं ये 4 का निकाल लेता हूँ। So we have mango smoothie, apple smoothie, banana smoothie, mixed fruit smoothie, fruit salad। So salad कैसे लिख लेता हूँ। अच्छा, तो मैंगो स्मूदी इज 5 + 3 8 का कॉस्ट एंड 4 का प्रॉफिट, सो 12 का रेवेन्यू होगा। एप्पल स्मूदी 1 रुपया कम होगा, सो 11। बनाना 1 लेस फ्रॉम दैट 10। अच्छा, मिक्स फ्रूट स्मूदी में सब कुछ आएगा कॉस्ट में, सो दैट इज 11 प्लस 8 का प्रॉफिट, सो 19। सो दीज आर द रेवेन्यूज आई एम राइटिंग। सैलड इज 3216 प्लस 6 12। अच्छा, तो यहाँ पे ये दोनों का कुछ कंफ्यूजन आएगा शायद, बट आई थिंक हाँ ये पॉइंट नंबर 1। अच्छा, तो कावेरी वगैरह से स्टार्ट करूंगा तो बेटर होगा आई गेस। एंड ऑल्सो लेट मी थिंक अबाउट दिस लेफ्ट ओवर थिंग, बट लेफ्ट ओवर का भी कैसे सोचूं, बहुत सारा। अच्छा ठीक है, रहने दो। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस वन, कावेरी नर्मदा एंड ऑल्सो मैं गंगा का भी करूंगा, बट आई जस्ट स्टार्ट विद दिस बिकॉज उसमें शायद कुछ कंफ्यूजन आएगा। ओके, कावेरी, वन सेकंड, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट। 1 2 3 4, अच्छा लास्ट ही बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 आवर्स।
This is 19. Okay, this is straightforward mixed fruit salad. 22, 12 plus 10. So mangoes मुझे आ नहीं सकता, तो this is why I was starting with Kaveri. तो यहाँ पे 12 plus 10 मतलब BS plus salad. 30, 11 plus 19, AS plus mixed fruit. Then we have 27. अच्छा, इसमें तो वो भी आएगा ना. अच्छा, वो कॉम्बिनेशन में बाद में देखता हूँ. नर्मदा का 31, so that is 12 plus 19. 12 plus 19 is this. 21, 10 plus 11. So 23 is 12 plus 11. 12 plus 11, AS plus MS. Okay. 22. Okay, ये तो बाद में देखता हूँ. अच्छा, इससे कुछ हुआ? अच्छा नहीं, गंगा का पॉसिबिलिटीज होगा. जैसे 11 plus 12, it could be AS plus either MS or salad. 21. अच्छा, this is fixed. AS plus BS. 29 is 10 plus 19. So BS plus 10 plus. अच्छा, और वो इससे कुछ आएगा क्या अभी तक? What best can be concluded the number of units of fruit salad sold in the first hour? हाँ, ये हो सकता है. Best about the number of fruit salad. तो ये सब जहाँ पे ऐसे सब कुछ है fruit salad, तो it could be either. Sorry, what? Oh, fruit salad. Sorry, मैं smoothie को salad. हाँ, sorry, salad तो ये salad. मैं खुद अपना notation से कर. तो either 1 or 2. Yeah. ये leftover related है. यूनिट्स ऑफ मिल, तो उसमें भी लेफ्ट ओवर का कुछ तो होगा कंट्रीब्यूशन. ये भी लेफ्ट ओवर रिलेटेड है. अच्छा, तो लेफ्ट ओवर का कुछ तो एनालिसिस करना पड़ेगा. व्हाट एल्स यू हैड? ओके, हाँ, तो दिस इज ओके. नो नो बनाना लेफ्ट ओवर. ओके. अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि मतलब दो डिफरेंट रॉ मटेरियल है बट सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं बोला है. बट ओके, ठीक है, अंडरस्टूड. सो बनाना लेफ्ट ओवर. ओके. तो रेवेन्यू वाइज इफ आई थिंक अबाउट दिस, व्हाट कैन बी द कॉम्बिनेशन? सो इन दो दो सबका बचा है. सो मिल्क प्लस मैंगो हो सकता है. That will give us a revenue. So these are the leftovers things. So combination one करके बोल रहा हूँ इसको. So mango will be 4 plus. So milk and mango 4 plus 2 6. Milk plus apple. This will be 4 plus 1 5. 2, let's say. Combination 3. Apple plus mango. So this is 1 plus 2 3. Okay. Now let's look at the possibilities. 22 जो है वो 3 plus 19 ही हो सकता है. 5 plus 17 नहीं है मेरे पास, और 17 combination 6 plus 16 भी नहीं कर सकता है विद combination. This has to be combination 3 plus this mixed fruit salad. ठीक है. 27, 6 plus 21 possible. 5 plus 22 also possible. 3 is not possible. तो ये 6 plus 21, so 11 plus 10, so AS plus BS, or with combination 2, 5 plus 17, sorry, 5 plus 22, 5 plus 22, 10 plus 12, so BS plus salad. तो बनाना स्मूदी तो डेफिनेटली सेल कर रहा है इसमें और इसमें है. ठीक है, बड़ा. अच्छा, 36 plus 24. अच्छा, 24 इसमें हो सकता है बिकॉज कपल ऑफ 12 कैन बी टेकन. 5 plus 25 not possible. 3 plus 27 not possible. So 6 plus salad. I confused myself. Okay, ठीक है. तो now let me quickly get the answers. Which of the following? इसका हाँ, ये हो गया था. Which of the following is necessarily true? Narmada sold 1 unit of leftover milk. Narmada C3 is not leftover milk. No. Kaveri sold 1 unit of leftover mangoes. Kaveri mangoes is not necessarily true. Milk is necessarily true, but not mangoes.
गंगा left did not sell leftover apples. हाँ, C1 में apples नहीं है. This is the answer. What best can be concluded about the total number of units of milk the three women had in the beginning? Oh, wow. Okay. Okay, this is quite case oriented. ये बाद में एक बार करता हूँ. If it is known that 3 leftover units of mangoes were sold during the last business hour of the day, how many apple smoothies were sold during the day? 3 leftover units of mangoes during the last business hours. C3 में तो मैंगो है नहीं. Oh नहीं, sorry, C3 में मैंगो है. Oh हाँ, तो अच्छा अंडरस्टूड. तो C2 नहीं आना चाहिए. So basically this case will come out. क्या निकालना है? How many apple smoothie, right? तो 1 2 3 4 5, इसमें आएगा 6. Okay, so 6. Fair enough. What best can be concluded the total number of units of milk, right? So milk, what I'll do is I'll start with the definites first. So milk कहाँ पे आएगा? All the smoothies will have milk. The salads will not have milk. Okay, great. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. C1 has milk 16 and 17, right? So 1 second, let me quickly check back. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So 17 is for sure. अभी केसेस यहाँ पे आइदर 1 होगा या 0 होगा. 0 और 1. एंड इसमें ये वाला केस लूंगा तो 3 आएगा, और ये वाला केस लूंगा तो 2 आएगा. तो 2 या 3 समथिंग लाइक दैट. एंड दिस कैन बी क्रॉस दिस थिंग. सो आई थिंक अच्छा, मैंने ज्यादा काउंट कर लिया, सॉरी. 1 सेकेंड. अरे यार, एक सेकंड, ऑप्शन से करता हूँ. मैक्सिमम 20 हो सकता है, और एक ज्यादा काउंट कर लिया था तो ना 18. हाँ सॉरी, मैंने वो डबल काउंट कर लिया था. तो 18 से 20 तक हो सकता है. ओके ग्रेट. ओके ठीक है. सो आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. ठीक है, वो लास्ट में देख लेता हूँ. ओके फेयर इनफ. आई थिंक वो सेट अगर हो जाता तो would have been a little better, but anyhow, somehow I missed something, I guess, or maybe in the analysis I'm missing something. Fair enough, I'm okay with the attempt. Isme, what am I missing? I'm missing something, but I can't identify what I'm missing right now. ओके, एक मिनट थोड़ा शांति से देखता हूँ. तो इसमें ए का ई एंड बी सी है. अच्छा, तो एक्वाइंटेंस कौन हो सकता है? एक एक करके देखता हूँ. डी पॉसिबल, ई इज नॉट पॉसिबल, एफ इज पॉसिबल, जी इज पॉसिबल. सो कुछ भी हो सकता है राइट नाउ. ग्रेट. आई थिंक ये कॉलम वाइज भी थोड़ा सोचना चाहिए था मेरे को. जैसे बी का एक फ्रेंड होगा. अच्छा, ये मैंने सोचा ही नहीं था उस टाइम पे. बी का एक फ्रेंड होगा और एक एक्वेंटेंस होगा, राइट? हाँ, ये वाला शायद एनालिसिस कर सकता हूँ मैं. आई एम नॉट श्योर, बट देखता हूँ एक बारी. तो बी का ई ए सी है, तो ए सी ई डी एफ जी में से कुछ होगा. ओके. ओ हाँ, अरे यार ये बोला था मैंने, बट लिखना भूल गया, इसलिए मेरा दिमाग से निकल गया था. एनीहाउ, सो दिस क्रॉस थिंग, सो 1 and 1, राइट? हाँ. तो बी का रो में वी हैव डी एफ जी रिमेनिंग. अब एफ एंड जी का फ्रेंड्स हो चुका है कंज्यूम, सो दिस हैज टू बी डी, राइट? सो वंस यू गेट दिस एज डी, तो ये बी हो जाएगा. सो बी एंड ई. एंड ऑल्सो ये डी ई अगर हो गया, वन थिंग यहाँ पे डी हो जाएगा. ए का डी, दिस क्रॉस थिंग, पॉइंट नंबर 5 and 6, 4 and 5 या 5 and 6, 4 and 5 whatever. तो ये क्रॉस वाला आइडिया. एंड ऑल्सो ए का अगर डी एक्वाइंटेंस है तो डी का भी ए एक्वाइंटेंस हो जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिक. एंड वी कैन फिनिश दिस 2 rows, राइट? सो ई डी, ए बी सी डी ई हो गया. दिस विल बी एफ एंड जी, एंड यहाँ पे भी एफ एंड जी. सो समथिंग लाइक दिस.
Okay, and F and G में A and B will be strangers, right? So ये stranger हो गया, ये stranger हो गया. हाँ, तो A B stranger है. हाँ, तो ये 2 3 हो गया. तो A B C तो D E F आएगा. D E F में G भर दो. तो this is G, this is G, and this is G. And what else now? Okay, E का देखो. E में एक entry बचा है, and this has to go here. So A, B, D, C बचा है. So C will go here. So C का यहाँ पे E आ जाएगा. Okay, this is done. हाँ, D के रो पे there are 2 entries remaining and यहाँ पे 2 होना चाहिए. So B, E and A, G. So A, B, C and F, right? So C and F आएगा. तो C का यहाँ पे D आ जाएगा and F का भी यहाँ पे D आ जाएगा. ठीक है. सी के रो में एक एंट्री बचा है, दिस वन ब्लैंक. ये आना पड़ेगा यहाँ पे. ए बी सी डी ई एफ आएगा. तो एफ में सी आएगा. ये डन है. एवरीथिंग इज डन, राइट? 6 6 6 6 6 6 6 या ऑल आर डन. सो नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन. आई मीन थोड़ा सा मेरा स्कोर बढ़ जाता. आई थिंक 6 पॉइंट मतलब 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता मेरे को इफ आई कुड हैव मैनेज दिस. आइडियल सिनेरियो में आई वुड नॉट हैव डन दैट बिकॉज इनिशियली भी मेरे को वैसे ही सस्पेक्ट हुआ था बिकॉज वो सिनेरियो बेस्ड था और ये सॉल्वेबल था. बट अनफॉर्चुनेटली गॉट स्टक सो आई हैड टू मैनिपुलेट मतलब आई हैड टू यू नो व्हाट इज दैट. अरे यार वर्ड ही दिया है क्या बोलते हैं उसको. accommodate accordingly. So yeah. Who are Gautam's acquaintances? So answers to I guess I jayega. Gautam's acquaintance DEF. So that is this. आपको तो answer mark दिख रहा होगा. Which of these pairs share the same type of relationship? C and E are strangers. D and G are not strangers. They are acquaintances. A and G are strangers. G यहाँ पे. E and F are friends. No. So B and C strangers. D and E friends. B and D acquaintance. F and G acquaintance. So yeah, that is the answer. Same type of relationship. Who is the acquaintance of A? Direct question. D. Dinesh. Who is the acquaintance of C? Acquaintance of CF. Answers देखो फटाफट आ जाता. Just missed that unfortunately. I'm feeling a little disappointed because this was not a tough set, it's an easy set actually. होता है, you can see everybody it happens, but how you salvage it, that is more important. So I think I did okay with it. Not up to the potential. I could have done maybe 6 marks extra मिलता. अगर ये करता तो वो करने का time I don't think आता पूरा because पूरा solve नहीं होता. So but I salvaged it smartly, so it's fine. How many friends Ezil has? 3. How many people are either a friend or a friend? Oh, okay. This is interesting. How many people are friend or a friend of Ezil? So friend to 3 have we already know from the previous question also. And A, D and F. A and F का अगर देखोगे एक friend ही है, only E. So friend of a friend कोई extra कोई आ नहीं रहा. But in case of D, we get B as a friend of a friend, right? So we get one more person, something like that. So 4 is answer this one. So I think that's all the sets. Analysis wise, I think you got most of it while I was solving only. My decisions in terms of set selection was not wrong. I think I was okay with it. I would like to point out one thing though. If I did complete this set, so then I'm not sure that I would have solved this set immediately or not. See, when I was doing the initial scan, I observed that the first 2 sets are very similar type in terms of strategy. So in terms of the type of set it is and the number of questions that they're there, both are having a parity. So both you have to first solve and then get to the answer. How do I identify that? Looking at the type of information that is there and more specifically looking at the type of question. So when I was going through it, I hope you observed, and this is what I was saying, a direct question, direct question, direct question, direct question. So this is what I was observing. So all of them are direct questions also. No if types or some scenario based.
So both had a bit of parity to it. So if I had managed to solve the first set, so then I might have taken the decision to go for the DI1 first before moving here, because DI1 luckily वो correct हो गया, मतलब time नहीं मिला था जो मैंने mark for review कर रखा था. I went completely by estimation. यहाँ पे थोड़ा calculation mistake किया था. I just count this. एक बार फिर से. I think the answer तो correct होगा CAT का है, but फिर भी check कर लेता हूँ. 3.6, 0.44. This is 1.9. That is 5.9. This is 0.4 to 6.3. 6.3.1 is 6.4. 6.4.3, 6.7. 1.5, 6.7, 1.5, 8.2. 8.2 and 4.3 or something. So that is 12 point. Yeah, 12 point something आ जा रहा था. And ये फिर 1, so that is 13.5. So count is fine, I guess. Excellent. Yeah, sorry for that. Yeah, so basically luckily वो correct हो गया, otherwise कभी-कभी वो this I was not that worried because it was theta. गलत होता भी तो ठीक है, marks तो नहीं कटता, but still I mean DI it's more of observation based. So if I had managed to solve the first set, I might have gone to the DI set. Depends also on the time that is remaining, तो उसके ऊपर मैं decision लेता. It could have happened कि बहुत ज़्यादा time बचा है तो I would have gone for the second set after the first set only. But yeah, that's all I had to add. So I'll check the chat and I'll unmute or allow you to unmute now. So if you have any specific questions or something, then go ahead and unmute yourself and ask right now. I'll wait for a couple of minutes. सर वो फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड थोड़ा बताएंगे सर, वो वाला फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड. ओ अच्छा, वो लास्ट क्वेश्चन. हाँ. तो क्या है मतलब फ्रेंड और फ्रेंड ऑफ फ्रेंड. ईजिल हैज 3 फ्रेंड्स राइट. हाँ. जैसे ए का फ्रेंड ऑफ फ्रेंड तो ई खुद हो रहा है, so you won't count E as a friend of E, right? That doesn't make sense. A and F में मतलब E के अलावा और कोई फ्रेंड नहीं है ना. But in D we have one friend of a friend, right? So from E's perspective, B will be friend of a friend, right? Because D का friend है ना. So 4 people, A, D, F and D. Anything else in general in terms of the solving decisions, anything? If not, you are. I had a question. Not audible. Am I audible now? I'm very low voice. Hello, am I audible now? A bit better, yeah. Go ahead. Yeah, so my question is that when you were solving the first set and you got stuck, like, why did you choose the third set and not the second one? No, I didn't choose third set after that. I chose the fourth set after that. Yeah, I mean the fourth set was like, looking at the set, it was. So after the first set, you're saying? Yeah. I think I mentioned this now, so I'll repeat that. So first set and second set to me had a complete parity in terms of the type of set as I define it. I define it as like whether the set is completely solvable or partially solvable or question by question. I always define it in these 3 categories. So completely solvable is a set which is something like this first set where you solve, see, everything is done, right? There are no cases also, no scenarios also, right? Yes. This is the solution of the first set, right? Similarly, second set, one second. This is what we are solving for, right? And see, again, completely solved, no cases, right? Yes. Now it can happen that there are like 1 or 2 cells which has case. I mean, I'm not getting that much. I mean, utna main kaise samjhunga just by looking at the question. So how do I determine that? By looking at the type of information that is presented and the type of questions that has been put in. So if I'm looking at the set, so first question, who are Gautam? Direct question, right? No option like cannot be determined or possibilities, nothing like that also.
if you look detailed manner. This also direct question, also direct question, also direct question, also direct question. I mean, theta to obviously direct question, right? This is also direct question. So first set, all are direct questions. So what is the what is probability telling us? Zyada chance kya hai ki you will have the set completely solved, and once you completely solve it, then you can just go after the questions one after the other, right? And then figure out the answers, right? So this is one type. Seventh was also the same type. That is what I sorry, seventh board, the second set was also the same type. That is what I observed when I was doing the initial scan, because this may be same here. Matlab, there are a lot of information given. You need to figure out and solve it, of course, something related to that. And if you look at the questions, very direct nature, right? All of these are direct questions only. I mean, even if you look at which of the following statement is false, I mean, if you go deeper into it, every issue had, I mean, there can be a chance that little bit of cases are there, but still, I mean, it's mostly should be solvable, right? First, and then you get into the questions. However, if you look at the third set, so just concluding whatever I said, so first two sets are sort of similar type in terms of वो जो तीन कैटेगरी मैंने बोला, completely solvable, partially solvable and question by question type, ये तीन तरह का मैं categorize करता हूँ. Now once that is I mean both are falling in the same category, I also find that both have the same number of questions also. So to me, set 1 and set 2 are bang on same type. There is no disparity as such in terms of initial scan. ठीक है? Third set में, look at the question. What best can be concluded about this? Look at the options. Either 1 or 2, either 0 or 1 or 2. So possibilities are there, right? Which of the following is necessarily true? So again, which of the following necessarily true मतलब क्या? कुछ हो सकता है कि could be true होगा, कुछ हो सकता है कि could be false होगा. Possible, right? Something like that. What best can be concluded about this? Look at the options. Either 18, 19, 20, either 17, 18, 19, either 18, 19, either 19, 20. So possibilities are there, right? If it is known that 3, so this is a theta, you might think that this is a direct question, but एक scenario दिया है, उसके ऊपर base करके पूछा है. तो obviously some scenario based हो रहा है ना, मतलब every question is giving me that feel. And furthermore, there are 4 questions to it, not 6 questions to it. So compared to 1 and 2, third set, I'm looking at it as कि there is a higher risk and lesser reward for me, something like that. So अगर सिनेरियो बेस्ड होगा तो सिनेरियोस में अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो there is a chance I make a mistake, right? So there's a higher risk to it and a lesser reward because there are 4 questions to it and those have 6 questions to it. So when I'm taking the decision, I'm taking the decision in that scope. My end goal to ultimately वही है ना, to maximize my score. That is my end goal. So after choosing the first, after going to the first set, I think I spent initially 10 minutes or something. Recording में check करना. Initially, I think I spent around 10 minutes or something. Final time तो ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि बाद में भी मैंने आया था इसमें. Oh, total time मेरा 9 minutes है. So I think initially मैंने बहुत ज़्यादा time इसमें spend किया ही नहीं है. तो initially I think सिर्फ मैं 6-7 minutes में शायद निकल गया था. तो 6-7 minutes में I took off from this and then I thought कि चलो अगर मैं second set try करता हूँ and second set में भी अगर फंस जाता हूँ तो 6-7 minutes में भी तो वो भी realize हो जाएगा ना. तो then what is the scenario? 12 minutes में 2 set नहीं हुआ, but CAT में ऐसा नहीं होगा कि मतलब 2 set by chance tough है तो बाकी 2 set तो बनना है. That is for sure. So keeping that in confidence, I went ahead and went to the second set. Did I make myself clear? I mean, did that answer your question? Yeah. Yeah. And of course after that, I mean ये करने में तो देख लो मतलब यहाँ पे तो exact time आएगा. This was what 10.5 minutes. ये तो seconds में होगा. This was हाँ यहाँ पे कुछ question में थोड़ा time लगा था तो 1 minute more time, half minute. So another what 2-3 minutes. So 10.5 to 3 minutes. So roughly 14 minutes. So 14 minutes में I was done through this set, right? So initial 7 minutes, 14 minutes, 21 minutes. So I have a good 20 minutes still left. So when I have 20 minutes left, to me, I felt that the DI one should be the most, the easiest one because see, when you have a pure DI, the 3 categories that I talked about,
in those three categories, the last one was what? Question by question solve hoga, right? If you have a pure DI set, it will always be the third category. कुछ होता है रीजनिंग बेस्ड DI, तो रीजनिंग बेस्ड DI में क्या होगा? There will be some information given and some additional points given on the basis of which you have to analyze and solve something. But इसमें वो नहीं है ना. इसमें ये जो अगर if you even take a rough glance here, you can observe that it is just elaborating this chart, nothing more than that. So if you have a pure DI, it has to be question by question. तो question by question का फायदा क्या है? I can treat it as a QA paper, right? अगर 4 क्वेश्चन है, उसमें से अगर 2 फटाफट हो जाता है और 2 बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो आई कैन लीव दोस 2, राइट? नो इश्यूज इन दैट. अगर बाद में लेट से 2-3 मिनट बच गया, अब कोई LR सेट तो सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो जो 2 क्वेश्चन छोड़ के रखा था, जो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, एटलीस्ट उसमें से एक तो हो जाएगा. सो यू कैन प्ले अराउंड विद दीस काइंड ऑफ सेट्स, जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टाइप का होता है. एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सिर्फ प्योर DI नहीं होता है. Pure DI ones are question by question, but question by question could be LR sets also, सिनेरियो के ऊपर बेस करके. There are CAT sets also. 2020 में भी था, 2019 में भी था. So they give these kind of things every now and then. ठीक है? Hello? Understood. Okay, great. Any other questions, guys? अच्छा, एक बारी फटाफट सबको एक बारी रिस्पॉन्ड कर दो, all of you, one after the other. मैं क्या करे पूछ रहा हूँ, Friyan? Yes, sir. Anything to discuss right now? No. Done? Everything clear? Yes. Okay. Gana? So everything's clear. Clear? Okay. Jay? और जय चैट में लिख रहा है. अच्छा, ठीक है. अरे चैट में जो लिख रहे हो लिख दो. कौस्तव? क्लियर सर. क्या? ठीक है? यस सर. हाँ सर. तू लेट में आया था ना, किस टाइम पे गुजरा तू? 27. अच्छा, ये आपका आपने जब वो सेट 1 सॉल्व करना शुरू किया तब. ओ सेट 1. अच्छा, फिर तो ठीक है ना. हाँ. यस. आई कुछ मिस किया कि? ओके, ग्रेट. तो एवरीथिंग इज फाइन, मतलब स्ट्रेटजी वाइज. ओके. सो ट्राई टू एम्प्लॉय दीस आइडियाज इन द नेक्स्ट वन. ठीक है? सौभिक तो पूछा था, आई एम गेसिंग, एंड मैना को पूछा था. Yes, sir. Clear, sir. Nana also, I'm guessing everything is fine. Yeah, yeah. ठीक है. Rest responded in the chat, and yeah, fair enough. So what I do is I'll give you a little extra break, ताकि थोड़ा सा you can go into a little bit thought process. अगर maybe lunch करना है तो कर सकते हो. So accumulated कर लो अपने हिसाब से. You can utilize whichever time you want. So I'll give you a 20-minute break, and you have a 40-minute break for next one, right? So 1 hour and थोड़ा सा 5-10 मिनट का ऑफसेट दे देता हूँ. So I'll start by 1:15. ठीक है? 1:15 PM I'll start the next analysis. ओके सर. ठीक है? तो ब्रेक Okay, sir. मतलब टेस्ट दे के फिर ब्रेक लेना है या ब्रेक लेके टेस्ट देना है. I will suggest ब्रेक लेके फिर टेस्ट दे दो, थोड़ा सा ब्रेक लेके, so that you can go ahead and mentally थोड़ा सोच सको कि how you manage the paper, how you could have improved in the way accumulating the things that I talked about, उसको consider करके. So employ that in the next one. All the best. We'll meet back at 1:15. I'll start by 1:15, so join maybe 1-2 minutes early. I've kept a big offset now. ठीक है? All the best, guys. See you at 1:15. Thank you, sir.